Hello everyone, welcome back to Sports Khabri. Curious Harry, Arun Foot, and Indian food and football. We're back to talk about football, kind of something well related to football. We'll talk about the Olympics as well. India's capabilities of hosting the Olympics, hosting the FIFA World Cup, if it ever pops up in conversation in the future. But yeah, it's been a while, guys. I mean, been a while as in it's been 2 3 days because we've taken a little bit of a break and now we're back to talk about football, not Indian football per se, but yeah, you guys get the gist. So this the backdrop is pretty much the rumors around India getting ready to getting ready to bid to host the 2036 Olympics. Arnava, your first thoughts on this because it's created quite the buzz on the internet in the past few days. One has to remember that at the moment, still today is the last evening of the International Olympic Association Congress in Mumbai, which is being hosted jointly by the Indian Olympic Association as well as Reliance, with Mrs. Neeta Ambani being part of the IOC Congress. And India has taken certain strides as a sporting nation. And cricket has today been confirmed as an Olympic sport from the 2028 Los Angeles Olympics. And if you see that in that context, in the new India sort of context, India bidding for 2036 is most probably a first step. But one has to remember it's sort of not a done deal. It's not like when Saudi Arabia bids for the 2034 FIFA World Cup, they're likely to get it. It's likely that Turkey, Mexico, Qatar, Germany are set to bid for those Olympics. So therefore, for India, it's going to be very, very interesting how India prepares itself, how it plays its how well it's prepared to get into that bid process, because that bid process itself is a long journey, and let's see how it moves forward. But it's an interesting step, and of course we'll discuss it in comparison, of course, of hosting potentially a FIFA World Cup also in the future. Yeah, Hiren, are we ready to host a big tournament like the Olympics? Your take? I think ready मेरे को वो question सही नहीं लगता. I think no country is ready at the any point to host any such events. I think you have to prepare for it. Either it's a developed country also, they also need a lot of preparation to host such a mega event. So prepare है कि नहीं है, उससे rather अच्छा है कि क्या हम तब तक prepare हो जाएंगे क्या, तब तक हम क्योंकि 2036 is a still long way to go, 12-13 years left. So you have a lot of time to build infrastructure, everything which is required to host any Olympic event. So I think I am more interested to see कि क्या इंडिया उस तरह की ग्लोबल लेवल का इवेंट होस्ट करने के लिए क्या उनके पास वो फाइनेंशियल पावर, मैन पावर, सारी चीजें, क्या वो सोर्स रिसोर्सेज है, एंड क्या वो कैपेबल है, एंड क्या वो उस तरह की इवेंट करने के लिए कितना विलिंगनेस है इन एवरी स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व है, उसका ज्यादा रोल रहेगा रादर देन थिंकिंग अबाउट कि क्या आर वी रेडी तो नहीं है ऑब्वियसली. अगर करंटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अदर देन क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टिंग आई डोंट थिंक सो कि वी आर रेडी फॉर एनी अदर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन सच अ वे दैट. सो आई थिंक बट मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि गवर्नमेंट फोकस इज टू होस्ट सच मोर यू कैन से ग्लोबल इवेंट्स. जैसे अभी G20 उन्होंने देख लिया पॉलिटिकल इवेंट, उसके बाद अब वो चाहती है कि स्पोर्ट्स में भी जो ग्लोबल इवेंट्स है उसकी तरफ उनका फोकस है. 2029 का वो ओलंपिक जो क्या बोलते हैं यूथ ओलंपिक्स होता है उसको पहले वो देख रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स द राइट वे कि आप 2029 में पहले यूथ ओलंपिक्स अगर आपको मिलता है होस्ट करने के लिए, देन यू गो फॉर द मेन इवेंट इन 2036 एंड वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक टाइम मिलेगा. एंड इंडिया में देखिए किसी भी स्पोर्ट को डेवलप करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का यही एक रास्ता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी फेडरेशन के ऊपर और वहां पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर भरोसा करना कि ये लोग ये कर देंगे, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है. इससे बेटर यही है कि उनके ऊपर प्रेशर आए, क्योंकि यहाँ पे इज्जत का सवाल आ जाता है. इंडिया में अगर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है तो आप देखिए कि कैसे भी करके आपको क्या बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सारी चीजें टॉप नॉच करनी पड़ेगी. तो जो ऐसी ग्लोबल इवेंट होगा उसका फायदा ये होगा कि उसके बाद की जो जनरेशन आएगी, मान लीजिए कि 2036 में ओलंपिक होता है तो एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा. तो उसके बाद के जो यंगस्टर आएंगे उसके लिए एक बेटर यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
अदरवाइज तो आप देखिए, अगर 2036 हम ओलंपिक या फिर अगर आगे हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, तो वहां पे मतलब हम कुछ करने वाले नहीं है। एंड उसी के चलते हम आई थिंक एशियन कप का भी टॉपिक आई थिंक डिस्कस करेंगे कि 2027 एशियन कप क्यों हमें होस्ट करना चाहिए था। कि एटलीस्ट अगर हमने वो होस्ट कर लिया होता तो 4-5 हमारे पास फीफा स्टैंडर्ड के वो उस लेवल के स्टेडियम रेडी हो जाते कि जो आपको वर्ल्ड कप में, मतलब अगर आपको होस्ट करना चाहते हो आप फ्यूचर में कभी भी, तो आपके पास बने बनाए हो, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड हम सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से लेके आपका एएफएफ तक हर जगह पे करप्शन है, हर जगह पे हम सबको पता है कि जिस तरह के लोग बैठे हैं, सो उनसे उम्मीद रखना आई थिंक वो ज्यादा ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ऐसी अगर कोई ग्लोबल इवेंट आती है तो एक प्रेशर आएगा उनके ऊपर भी, गवर्नमेंट का भी प्रेशर आएगा एंड सारी चीजें होगी, गवर्नमेंट का फंड भी मिलेगा आपको आपका स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई फुटबॉल में क्यों गवर्नमेंट स्टेडियम नहीं बना रही, क्रिकेट के स्टेडियम बना रही है या फिर इसके नहीं बना रही। तो आई थिंक अगर ऐसे इवेंट होते हैं ओलंपिक्स फीफा, तो वो भी एक फायदा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब रैपिडली आप ग्रोथ कर लोगे। सो दैट्स द पॉजिटिव। Exactly, Shane. Hiren makes a valid point because doesn't that kind of push, if we had hosted, for example, FIFA World Cup, or if we get the bid to host the Olympics, that kind of pushes in India to really develop the infrastructure, and that kind of sets you up very nicely for the future after that, right? You have to develop infrastructure, you have no choice. So how do you take to that, because it kind of forces you to go in the right way? See, but I think I agree with Hiren's points, and I think one thing I want to add, just I think one important part, I think hosting a Olympics and a FIFA World Cup is very different. I think it's very tough for any organizer to host, and I think he said it correctly that कोई भी अगर कोई भी कंट्री में आप जाओ, अभी कोई भी रेडी नहीं होगा, कोई भी कंट्री को उठा कर पूछ लो, कोई रेडी नहीं होगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को लगा जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे 2010 में, जो मेरे को लगा था इज हाउ वी सेट इट अप, एंड उसके साथ जो ब्लॉकिंग का जो काम होता है। आपको मेरे को याद है 2017 में जब अरुणाउदा को पता होगा दैट जब फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, and I think the FIFA, the representative who came in Kolkata and other places they visited, in Kochi especially, उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट में दे आई थिंक one of the officials actually slammed one of the ministers in West Bengal, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देखे लगा। ये बहुत सबसे बड़ा दिक्कत है मेरे को लगता है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, और इसको हम लोग को ठीक करना है। 2036, हाँ ये बात सही है, वी हैव अ गुड टाइम है हमारे पास, 13 साल कम टाइम नहीं है। और ओलंपिक्स अगर होस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट अच्छी बनेगी, हमारे फ्यूचर के जो स्टार्स हैं, जो फ्यूचर जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी एक अच्छा क्या बोलते हैं एक माहौल बनेगा खेलने का। बिकॉज देखिए आप ओलंपिक्स होस्ट करोगे, वर्ल्ड कप होस्ट करोगे, एक माहौल बनता है, एंड वो माहौल ना जो जैसे हिरेन बता रहा था अभी, आई थिंक एशियन कप अगर हम लोग होस्ट करते हैं, वो माहौल का ना एक टेम्पो सेट होता है। एशियन कप अगर 2027 में हम लोग होस्ट करते हैं, जो हम भाई अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पा रहे। तो मेरे को सिर्फ यही चीज देखना है, एएफएफ का भी सोच होना ही चाहिए, ऐसा चाहिए देन उनको भी वर्ल्ड कप होस्ट के लिए सोचना है। बिकॉज उनका जो एजेंडा था 9 महीने पहले, जो मैंने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला था दे आर होस्टिंग में वो ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे, दे वांट टू इन्वेस्ट इन अदर प्लेसेस। सो अभी गवर्नमेंट का अगर प्रेशर आएगा, जब हिरेन बोल रहा है, तब तो 100% काम बनेगा। ये तो 100% की बात है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। दे कैन ऑलवेज पिच इट थ्रू एंड दे कैन गेट थिंग्स डन। बट मेरे को लगा गवर्नमेंट ही करे तो अच्छा है, हमारे फेडरेशन से तो मेरे को नहीं लगा। आई थिंक ये अच्छा है गवर्नमेंट करे, आई थिंक गवर्नमेंट ही कर सकता है, मेरे को लगता है एट्स अ गुड पार्ट इन ओलंपिक्स। से बात बोलूं, एज एन ओलंपिक नेशन क्रिकेट आज आई थिंक इज अ गुड थिंग दैट क्रिकेट को मिला है। बट ऑन जोक्स अपार्ट, मगर ये भी है जो एक एक स्पोर्ट से अभी ब्रोंज पाना सबसे इजी होगा मेरे को लगता है, यही एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है आई थिंक, सबसे आई थिंक सबसे मजेदार स्पोर्ट्स होने वाला है क्रिकेट। बट एक चीज है, क्रिकेट एडिशन होने से इंडिया के लिए अच्छा एक सिग्नल है। होपफुली देखिए इसका इससे क्रिकेट का भी इम्प्रूवमेंट आए। आई थिंक क्रिकेट और ज्यादा कंट्रीज में खेला जाए जो अभी नहीं होते, तो वो एक अच्छा चीज है। ओलंपिक्स होस्ट करना बहुत बहुत टफ है, अगर इंडिया कर लेती नथिंग लाइक इट, बट इट विल बी वेरी टफ, दोनों चीजें इट विल बी टफ। होपफुली आवर गवर्नमेंट कैन पुल दिस थ्रू, ये मैं फिंगर Yeah. क्रॉस्ड, nothing like Yeah, and now coming to the football part of it, would you say that the right route is I FIFA? just want to add one point before you continue what Shine said Yeah. regarding cricket being added. I think cricket being added is potentially a medal. On the other side, we're losing boxing.
I think this has been underreported today in India. Boxing, Yes. because of the fights of the international bodies, has been axed, and we've received many more medals in boxing than cricket can ever deliver. But that again, but it's a big money talk, right? So therefore, we discussed today cricket and cricket's entry. But I think for India, for Indian boxing especially, it's a dark day because boxing at the moment is not going to be part of the LA Olympics in 2028. Yeah. Yeah. Lolvina Borgohain, probably one of the biggest names right now in Indian boxing. So kind of sad for, of course, Yeah, I foreign mean, sport. coming to the football part is, I think for us, it's we have seen the infrastructure development in India due to the under 17 World Cups, men's and women's, boys and girls. Yeah, we talk about 2014 when a certain level of infrastructure development happened due to the ISL, but 2017 for me is very, very crucial. And the gentleman that Shine was speaking about is the tournament CEO, which was Javier Shepi, who was a Chilean, who openly addressed these problems. And I think he was able to address these problems because he was a foreigner. I think if the CEO was an Indian of the organizing committee, a man, the head of the organizing committee, I think it would have been difficult. And he was very, very blunt about that Kochi stadium at the time, saying, how can that stadium stand? And the same thing was said a few weeks ago by the AFC General Secretary. And I think that is a question that needs to be answered. Best example is the redevelopment of the Salt Lake Stadium. Even though that needs another redevelopment in itself again, right? Because a lot of it was patch-up work in 2017. But we have had infrastructure developed to a next level. If you look at the Fatorda in Goa, if we look at other developments, but again, there are multiple stadiums because of internal issues which haven't been developed. Best one, I think, Rahul, you go to that once in a while. There's the Kantirava, which desperately needs redevelopment, right? So therefore, infrastructure development is something, and especially in connection with the Football World Cup, I think most of the stadiums would have to be rebuilt. Mm-hmm. Olympics is going to be most probably in Gujarat. So therefore, the question is, what kind of infrastructure is built over there? Will you play everything there? Football could be spread out, has been done by other countries as well. If that happens, that's a chance to develop infrastructure in other parts of India. So therefore, it would be interesting to see, but Olympics happening for India, I think 2036, 2036 is a potentially first bid for India. And that has to be understood, that it's not just saying, hey, we want to host the Olympics and you're going to get it. No. There are multiple countries vying for that. There is a new interest in hosting Olympics after Paris and LA have gotten 2024, 2028. And therefore, it will be an interesting race. If Mexico City, if in Istanbul, if a Munich here in Germany, if a Qatar bid for it, India will have to do its homework. And for that, one thing people forget, have you seen the Asian Games medal tally of India in Olympic sports at the just concluded Asian Games? If you see that, India's actually done worse than 4 years ago or 5 years ago. So we need to develop and evolve as an Olympic nation. There's a lot of work in Olympic sports to be done. And that is something, hopefully, that if India is going to bid, a lot of money, hopefully, will be spent on grassroots, infrastructure, and coaching. The same problems we talk in football. We need to develop and evolve in all sports. सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो आपने बात की, सॉरी राहुल, ये मेरे को एक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, सर ने जो बोला ग्रास रूट का, आई थिंक वो भी एक क्रूशियल है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने फीफा अंडर 17 2017 में जब हमने होस्ट किया, आप तब देखिए कि जो उस वाली हमारी बैच है, अभी भी आप देखिए उसमें से कितने प्लेयर हमारे नेशनल टीम में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से एक्सपोजर मिला, उनके लिए जिस तरह से, क्योंकि आपको एक प्रेशर आ जाएगा कि भाई इंडिया की टीम यहाँ पे जो जिस भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही होगी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू, वहां पे आपको भाई आपकी टीम को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी
आपको भी ये करना है कि भाई चलो हमारी टीम भी एटलीस्ट थोड़ा सा जो अच्छा कर ले, ना कि मेडल जीते, लेकिन कुछ कुछ स्पोर्ट्स में आप चाहोगे कि एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल वे में परफॉर्मेंस दे। तो आई थिंक वो भी एक प्रेशर आता है, ना सिर्फ एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको ग्रास रूट में भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप दूसरे स्पोर्ट्स में चाहोगे कि हाँ भाई हमारी टीम अच्छा करे, एक्सपोजर दोगे उनको, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। सो ये भी एक उनका बेनिफिट है। एंड काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, जिन्होंने होस्ट किया उनके पास पैसे है। देखिए ये देखिए पॉलिटिशियन और वो सारे अपनी जेब में डाल रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ पे ही खर्च कर दो, और वो पैसे का तो हो जाएगा भाई। इंडिया हैज मतलब वो तो हो जाएगा। आई डोंट सी नहीं प्रॉब्लम। हमारे से भी जो वर्स्ट क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली कंट्री है, उन्होंने भी होस्ट कर रखा है। सो पैसे का तो आई थिंक पॉलिटिशियन के जेब में से जाने से तो अच्छा ही है कि एटलीस्ट ऐसी ऐसी जगह पे खर्च खा के हम डेप्थ में आते हैं, तो वो अच्छी बात है, रादर देन पॉलिटिशियन खा के फिर हम इंडिया क्या बोलते इकोनॉमिकली वर्स्ट कर रहा है। तो ये इससे तो ये बेटर बात ही है। And there's another point. Olympics is, at the moment, the way it's structured, the way it's run, the host country, the host city loses money. But Yeah. your infrastructure development of that city, of that state, of that country, depending on size, is exponential. Yeah. Because I always take the example of 1992 Barcelona Olympics. Barcelona at the time was a museum city, so to say, and it due to the Olympics, they built up the infrastructure, the metro system, the roads, the beachfront. Everything was developed for the Olympics. Besides the infrastructure, FC Barcelona, Camp Nou being redeveloped. Where are they playing? At the Olympic Stadium, right? So this is something which one should not forget. Commonwealth Games, the biggest, forget all the corruption, everything that happened, as bad as all of that is. But the Delhi Metro today would not be what it is without the Commonwealth Games. That was the starting point. A lot of infrastructure projects happen in Delhi. And that is something which you need to realize what is a potential positive with all the negatives that are going to happen. And we don't need to kid ourselves. A lot of corruption and all that will happen. It's India, right? That's a reality. But we also have to take the positives into it, which is sports infrastructure, sports development. That would normally not happen on a scale, because suddenly India, not only the government, but also the corporates, the Reliances of this world, the JSWs of this world, the Adanis of this world, all of them, the Tatas will come forward and exponentially grow their sports development, right? We will have people coming to India who would normally not. So therefore, there's a lot of, to quantify the cost and quantify the profits or the loss is very, very difficult, because it's also PR machinery. Look at what Qatar has done. I went to Qatar in 2011 for the Asian Cup. I hopefully will go next January for the next Asian Cup. Those will be two different countries, because 2022, the FIFA World Cup, Qatar has built its infrastructure. It didn't have a metro. It was running on buses, on taxis. Now the infrastructure the city has grown, and all of these things I feel are very, very important factors and positives of Olympics. And of course, sports is at the end of the day also soft power for the government of India to utilize. That is something which a lot of people forget, and that is something I think that India needs to work on, and rather we focus on sports than on politics and what other things, bad things are happening in the world today. Yeah, absolutely, guys. Everybody who's watching, please like the stream, share the stream, subscribe to all the 4 channels: Sports Coverage, Curious Harry, Arun Food and Indian Food and Football. Again, question to you guys and the audience, everybody watching. Shan, should India, from a football point of view, should we attempt hosting an Asian tournament before moving to the World Cup? Is that potentially going to be a huge difference, or would you say if India is capable of hosting the 2036 World Cup and we're already eyeing it, we can probably attempt at hosting a FIFA World Cup? If you ask me personally, I should go with, we should, हम लोग को पहले एशियन कप होस्ट करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हम लोग, बिकॉज देखिए लॉजिस्टिकल चीज रहती है, वहां पर कितने कंट्रीज आएगी, वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज आएगी, वहाँ फीफा, एएफसी, सब एवरीबडी वुड बी इन्वॉल्व इन होस्टिंग अ वर्ल्ड कप. सो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर एशियन कप का एक एक्सपीरियंस रहता है, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता हम लोग को, क्योंकि हम लोग अभी तक फीफा का कोई सीनियर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है.
अगर आप देखो अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो है, हाँ, इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस इन इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप. अटेंडेंस वाइज इट इज द मोस्ट अटेंडेड वर्ल्ड कप इन अंडर 17, बट इट विल बी नॉट द सेम इन द केस ऑफ अ सीनियर वर्ल्ड कप. तो ये चीज भी हम लोग को देखना है. और आई थिंक हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2027 में, जो हमने गवा दिया. आई थिंक हम लोग ने गवा दिया 2027 में. आई थिंक सऊदी अरेबिया को मिल गया वो बिड. शायद हम लोग थोड़ा पुश करते हैं, हम लोग ने बैकआउट कर गया लास्ट में. आई थिंक गवा नहीं, आई थिंक वी बैक आउट इन लास्ट मोमेंट. अगर वो करता, आई थिंक वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज सी वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट वर्ल्ड गेम. बिकॉज एशियन कप, हाँ, आई अंडरस्टैंड एशियन कप इज सही है. एशियन कप अरुणा उदा गए हैं, यस, गॉन टू द वर्ल्ड कप आल्सो, यस, उनको पता है. बिकॉज दादा, इफ यू बीन इन दोहा इन 2011 or 2019 UAE, and you've been in 2006, and when World Cup was in Germany, so this is a huge difference, Dada. This is a huge difference in See, terms of everything. there is a difference when you talk about sort of evolved football countries. If you Correct. ask Germany, Spain, England, France to host a tournament tomorrow, they could do that. They have the basic infrastructures there. I mean, London could host a football World Cup. It has so much of sporting infrastructure. London has, has that capability. So the point is also to see what can you organize, and potentially we should not forget when we talk about a FIFA World Cup, if Saudi Arabia gets 2034 to host, and if we have that cycle of continents, the point here is that in India, at the earliest in 2042, most likely in 2046, could bid to host a FIFA World Cup, right? So, and that would mean a lot of time, which means if we host, let's say, the 2031 Asian Cup, that could have been something if we had worked out something with the AFC. What FIFA has done, in regard to 2018, 2022, but all the problems, again, we can, if you want to talk about the corruption, then we can shut down everything. But at the end of the day, 2031, I feel also would have been a good date for India to host an AFC Asian Cup, because that gives us time not only to develop the infrastructure, but also develop our team. Which, again, that's a different discussion, but we were discussing it the other day, right? We're still banking on a 39-year-old Sunil Chhetri to bail us out. And that is something which I feel that for us, Kochi needs to be a venue, but needs to have a new stadium. Bangalore, either the Kantirava is completely rebuilt and built new, or you build something brand new. I don't know if BFC will ever get the right to fully, properly develop the Bangalore football stadium. And it goes on with our lists of where to go, what to do, right? So therefore, again, we could go to Mumbai and say Mumbai Football Arena is too small. DY Patil is a cricket cum football stadium, so you're too far away from the action. You could do some work on the Salt Lake Stadium over there. So, and the sizes of the stadium need to be 30,000-40,000 seater capacity stadiums. So all of these things need to be looked at. And again, it is very, very important that India is part of the global sporting ecosystem. I think that the Congress is happening in India, that we're talking about the Olympics, is a big step. Is it going to happen? That's not said. It's not set that in 2036 India will host the Olympics. If India does the first bid in 2036, maybe we might get the Olympics in 2044 or 2048. So therefore, the discussion comes back is potentially of hosting a FIFA World Cup before an Olympics, right? So that's something that needs to be that one needs to look at, and it's not an easy one, because it's that's where we need to go. Guys, but even on a footballing front, like, it's a question to all of you, because wouldn't the Asian Cup itself be a huge boost for us? Wouldn't that be exponentially increasing our infrastructure and
stadium, everything. I mean, wouldn't that be a really good next step before we start talking about the World Cup or the Olympics? Anybody, are you hitting? डेफिनेटली आई थिंक 2027 हमने जैसे रंदा ने बोला कि गवा दिया अपॉर्चुनिटी एंड 2031 इज नाउ a real chance for us to get the hosting right. I think वो एक perfect हमारे लिए प्लेटफॉर्म हो जाएगा बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप होस्टिंग एंड 31 के हिसाब से आई थिंक मेरे हिसाब से टीम भी आपकी उस तरह की आप बिल्ड कर सकते हो कि जहाँ पे एटलीस्ट आप रियलिस्टिक ऑप्शन रखो कि आपका एशियन कप में आपका परफॉर्मेंस एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल लेवल तक का हो पाए. सो आई थिंक उस डायरेक्शन में सोच के अगर हम चलेंगे 2031 का अगर हम देखते हैं क्योंकि आप देखिए जो विजन 2047 है उसमें भी आपने 2026 तक 2 स्मार्ट स्टेडियम बनाने का प्लान रखा है लेकिन अभी तक तो उसका कुछ यहाँ पे अता पता नहीं है. सो आई थिंक जब तक आप देखिए हम काफी सारी चीजें ग्रास रूट की बात कर ले लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए एंड वो भी एक हार्श रियलिटी है हमारी की वहाँ पे भी हम काफी ज्यादा अभी लैग कर रहे हैं. सो आई थिंक अगर इस तरह का कोई बड़ा मेगा इवेंट जाने से पहले अगर आप देखिए कि एशियन कप जैसे इवेंट अगर हम होस्ट करते हैं तो फिर भी एक आप अच्छा एक आप सेटअप कर पाओगे एंड एक जो फोकस है आपका वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो ग्रास रूट डेवलपमेंट या फिर जो आप टीम फ्यूचर के लिए बिल्ड करना चाहोगे उसके लिए रहेगा. सो 2027 तो आपने गवा दिया है क्योंकि यू सपोर्टेड सऊदी. 2031 में आई थिंक लेट होप सो कि आपने जैसे मतलब सऊदी को सपोर्ट किया है पॉलिटिकली. आई थिंक इस तरह की एएफएफ ने मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उन्होंने कुछ इस तरह के यहाँ पे टर्म्स कंडीशन या फिर जो भी उन्होंने जो डिस्कशन या फिर अपनी तरफ से रखा हो उसमें ऐसी कंडीशन रखी हो कि भाई जब इंडिया कभी होस्ट करेगा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2031 में इंडिया ने होस्ट डाला बीट डाला है तो सऊदी हमारे अगेंस्ट वोट डाल रहा है. सो फिर तो आप फेल हुए एज ए लीडर आप फेल हुए मतलब आपका जो अपने जो जॉब है उसका काम सही तरीके से नहीं किया सिंपल सी बात हुआ है. सो आई थिंक 2031 या आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा एंड 2034 अगर आप देखिए कि फीफा वर्ल्ड कप अगर सऊदी को मिलता है तो जैसे सर ने बोला कि हमारा जो फिर रियलिस्टिक ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2046 जो कि भी मेरे हिसाब से एक सही है. जैसे सर ने बोला कि 2036 इज नॉट दी यू कैन से कि शॉर्ट शॉर्ट कि आपको मिलेगा ही मिलेगा. आप मे भी उसके बाद का वेट करोगे 2040 का करोगे 44 का करोगे तो आपके आपके चांस धीरे धीरे उसमें से किसी में लग गया फिर आप दोनों इवेंट नेक्स्ट क्या बोलते हैं 3-4 साल के स्पान में कर सकते हो कि 2044 ओलंपिक्स 2046 फीफा वर्ल्ड कप या फिर 2046 फीफा वर्ल्ड कप 2048 आपका क्या बोलते हैं कि ओलंपिक्स एंड 2047 में आपका क्या बोलते हैं कि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो रहा है. तो एक सारा चीज आप एक पूरा एक क्या बोलते हैं कि जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो एक ग्लोबल इवेंट की तरह आप कर सकते हो नेक्स्ट 3 ईयर्स में 46 47 48 3 साल आपके लगातार वो होंगे एक पूरा फेस्टिव टाइप का माहौल क्रिएट कर सकते हो. एंड जैसे आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज ऑल्सो अबाउट दिस सॉफ्ट पावर जो सर ने बोला. आई थिंक वी ऑल नो कि जो फीफा के प्रेसिडेंट होते हैं वो कितना मतलब एज ए पावर रखते हैं कि कोई भी कंट्रीज के मतलब आप देखिए पॉलिटिकल लीडर्स है वो मतलब ज्यादा पावरफुल बंदे बंदे होते हैं. तो आई थिंक उस सेंस में भी अगर इंडिया इस तरह की कोई मेगा इवेंट होस्ट करता है तो आई थिंक वो एक सॉफ्ट पावर तो डेफिनेटली हमारे लिए एज ए जियो पोलिटिकल एंगल से भी बात करें वो भी एक काफी ज्यादा बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा. Yeah, a lot of people in the chats are quite disappointed about India not being able to host the 2027 Asian Championships. But Shan, there's a culture angle to this as well, a culture and footballing culture angle to this. What sort of impact will it have on the Indian footballing culture if such a big tournament happens in India? Would that not exponentially increase the Indian football market, and would that really bring a lot of people in to watching Indian football? See, if you ask me, I think hoga, but it will depend on how our national team plays in the World Cup. वो इम्पोर्टेंट होगा. हम होस्ट कर सकते हैं. आपको याद होगा अंडर 17 जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडियन के मैच में अच्छा क्रेज था एंड उसके बाद भी वर्ल्ड कप में क्रेज था कहीं भी सब जगह पे. बट उसके बाद क्या हुआ? नथिंग. नथिंग नहीं मतलब इन द सेंस मतलब हम लोग जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर नेशनल टीम परफॉर्म्स ऑन द गिवन डे. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एशियन कप अगर हम लोग होस्ट करते हैं विद रियलिस्टिक ओपोनेंट्स एंड विद दैट फैमिली माने द क्राउड बैकिंग एंड आई थिंक हाल फिलहाल हम लोग का होम का जो रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है. अगर हम करते वो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा एंड वो बिल्डअप करता. वर्ल्ड कप हम सीधा डाल दोगे ना हम लोग अभी भी पीछे है. लेट्स बी वेरी वेरी ब्लंट ऑन दिस थिंग. अभी भी बहुत पीछे हम लोग अगर अदर कंट्रीज इन वर्ल्ड के जो
ताबड़तोड़ कंट्रीज है। तो यही मेरे को चिंता है। बट होगा आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होगा, आई थिंक ऑब्वियसली एक बड़ा चीज होगा। बट अगेन मैं बोलूंगा नेशनल टीम कैसे परफॉर्म करता है वहाँ पे होस्ट करके, अगर यहाँ पर लॉर्ड बेके सही वही से होस्ट करके अगर ह्यूमिलिएशन हो जाता है, आई थिंक वो तो इनडायरेक्टली और खराब इफेक्ट हो सकता है, राइट? एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, बट इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर अस। आई थिंक हीरेन का बात अरुणावदा का बात से मैं एकदम सहमत हूँ। अगर एशियन कप हम लोग होस्ट कर लेते हैं 2031 में और वहां पर कुछ डिसेंट रिजल्ट्स निकालते हैं, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते हैं, फिर एक रे ऑफ होप आएगा। यू हैव टू गेट सम रिजल्ट, नेशनल टीम हैज टू प्ले गुड, ठीक है? तो ये फैक्ट बात है। सी आई थिंक मुरलीधर जो हीरावत बोल रहे हैं एवरेज माइंडसेट में, उनको एक बात बोलूंगा, 25 साल नेशनल टीम और नेशनल टीम को फॉलो करने के बाद मेरे को जो लगा है दैट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट भाई। अरुणावदा को पता है, अरुणावदा जब football.com लिखते थे, शायद आप उस टाइम, आई थिंक यू वर नॉट बोर्न दैट टाइम, तब अरुणावदा का जो सोच था और अभी वो उनका जो सोच है, मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ बिकॉज आई हैव टॉक्ड विद पीपल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू एक्सेप्ट करो यार, हम, मैं नहीं बोला इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, आई थिंक वी शुड लुक एट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बैनिंग एक्चुअली स्टेइंग कम्युनिटीज नेम, एंड दैट इज वेरी वेरी डिरोगेटिव। आई थिंक वी शुड टेक स्ट्रांग एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। वेरी वेरी डिरोगेटिव, very very derogative. You can't say in a person in a community, you can't take a community name in a live program like this. Yeah, yeah, that shows from which family they can belong. yeah. लेकिन सेंध आपने एक यहाँ पे क्या बोलते कि एक चीज जो बोली ह्यूमिलिएशन, आई थिंक वो किसी ने कमेंट भी किया ह्यूमिलिएशन का। लेकिन आई थिंक आप देखिए कतार ने होस्ट किया, कतार तो क्वार्टर फाइनल में नहीं गया, तो ऐसा नहीं कि आपकी टीम टॉप नहीं है तो आप मतलब आप अगर आप होस्ट करते हो तो आपको जीतना ही है या फिर उस तरह का एक ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है ना कि मैंने ये नहीं बोला ह्यूमिलिएशन होगा। मैंने क्या बोला, अगर आप मेरा बात अगर ठीक से सुनोगे, मैंने क्या बोला है, आई सेड वन वेरी क्लियर थिंग हियर। आई सेड नहीं जो जिसने कमेंट में बोला ह्यूमिलिएशन, हाँ उनको एक्चुअली वो तब एक्चुअली उन्होंने फुटबॉल हाल फिलहाल में देखना स्टार्ट किया, इंडियन फुटबॉल। आई बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नहीं लेकिन ह्यूमिलिएशन होता है तो ये भी तो हो सकता है कि एक ट्रिगर पॉइंट हो गया कि भाई आपकी बेइज्जती हो गई, तो फिर क्या बोलते हैं फैंस लोगों का प्रेशर आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। वो भी तो हो सकता है ना कि अगर आप इसे इवेंट but who cares, Hiren? You are saying that, who cares what has happened in the last 2 months? Has anybody cared what has happened in the last 1 year? Has anybody cared? No. Business as usual. So the point is, and all I of think this, I think we should look into one thing. One thing we should address. People like this kind of people should not be entertained over here because community का नाम लेके बार बार बोला. I've seen this guy doing it for a long time. I think Rahul, I think we should look into this kind of things. We have to ban this kind of people. Yeah. The point here is there are 2 points actually which come together. One is participation, and the other one is hosting. India hosting an Asian Cup and getting into the quarterfinals, theoretically possible, but you have to have a good draw. The question is again, when are we starting to focus, and it's not just a football thing, it's a general sports thing, on the grassroots, the coaching, the youth development, to develop athletes who are better and stronger. And the point is, these large events put a lot of focus on that. Even suddenly mainstream media will look at things and question things. But the point is also, in today's media, is there a realistic look at how things are developed? Again, India at the Asian Games, for its standard, did very well. But just look how many gold medals China got compared to us. Right? So that's the realistic thing. So the point is, we need to be realistic in the development and the graph path. Otherwise, things will not happen. And to give pipe dreams, as a lot of people give, will not work. We are not in the situation of being a Qatar or a Saudi. Let's be very clear on that.
They have the money and they also have the political power in this globe. We don't. Anyone thinks that? Go home, do your homework. Right? Yeah. And it's a polarized world. So India needs to also take a decision who's my friend and who are not my friends. And that is also going to decide if we will ever host a FIFA World Cup or an Olympics. Because you will have to get as many friends as possible to support you. Member associations. There are 200 plus countries, territories in FIFA. And if Sir, the general body has recently, to decide, 106 votes is the minimum that we need to get. ये जो रिसेंटली अभी आसियान का भी वही चक्कर चल रहा है ना कि 2019 में उन्होंने एग्री किया था कि हम ज्वाइंटली बीट करेंगे, लेकिन अभी मलेशिया सऊदी को सपोर्ट कर रहा है फॉर द 2034 वर्ल्ड कप. सो डेफिनेटली वो भी एक आपके लिए एक बड़ा क्या बोल टास्क रहेगा टू गेट सपोर्ट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज. या आप मतलब सिर्फ ये तो वो भी एक चैलेंज है डेफिनेटली, क्योंकि आसियान में भी अब नेक्स्ट वीक आई थिंक उनकी मीटिंग होने वाली है कि क्या वो ज्वाइंटली बीट करेंगे कि नहीं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आई थिंक that is the point, Hiren. That is, did the AFF do its homework by saying, "Take 2027, I'm leaving. We don't want to bid for now." But do we keep the option open with the AFC, with the AFC member nations? 2031, potentially, we could host this tournament. Was there a conversation happening with the sports ministry? Did a conversation happen with the Prime Minister that India should host this competition? एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा इसमें कि आई थिंक जो पहली बार मेरे को लग रहा है कि जो नया एएफएफ रिजिम आया है उसका और गवर्नमेंट का जो विजन है वो डिफरेंट लग रहा है अभी, क्योंकि जो गवर्नमेंट का विजन है वो मोर ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने का है, जबकि एएफएफ का विजन वो नहीं है. इसी के चलते उन्होंने 2027 एशियन कप से बैकऑफ किया है. सो आई थिंक नरेंद्र मोदी सर की लीडरशिप में अभी कल्याण चौबे जी इस पार्ट को नहीं देख रहे, वो वहां पे कोई डिफरेंट पार्ट से जा रहे हैं ऐसा अभी दिख रहा है. जिस तरह से आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने 2031 भी उनका टारगेट है आई थिंक कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर होता तो आपकी टॉक्स और सारी प्रिपरेशन आपने जैसे बोला कि अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप 2027 के बाद आप उसके लिए प्रिपरेशन चालू करोगे और एकदम से आपको मिल जाएगा. सो आई थिंक उस सेंस में वो गवर्नमेंट का और एएफएफ का विजन डिफरेंट है. There is one thing, if you remember last year, what was the reason in the end that the FIFA ban had to be lifted quickly? What was the reason, gentlemen? This was government interference, right? I think government. No. Why was it lifted so quickly? I think our chief prime minister and I think others also played a role in this. They also wanted this to. There was one reason, because the sports ministry wanted to ensure that India hosts the under-17 Women's World Cup. Women's World Cup. Yeah. That was the reason. In the end, that was the reason to get everything done. Right? So if the government wants, they're capable of doing that. But there needs to be that desire. And that is, as Hiren is correctly saying, AFF has to show that vision, that desire. Humko ye tournament chahiye. We want something. We want to grow the sport. But AFF also knows that if the spotlight comes on them when they're hosting these tournaments, because the under-17 Women's World Cup exposed India badly, that we don't have an infrastructure for youth women footballers to play anything. There's no league, there's no structure, nothing, zero. We got totally exposed. And that is something that is most probably something with the federation on one, which the IOA also doesn't want. But on the other side, which the government wants. And therefore, is it a decision of the sporting association or the central government? It is the central government which will say, Mr. Narendra Modi has now set the benchmark by saying we want to host the Olympics. Yeah. Plus, it said, if IOA is for it or against it, doesn't matter. No one will, they can say whatever one. Pradeep Chaubey as joint secretary or PT Usha as president. But the point is now that this marker has been set. But I want to now interested कि whenever the next interview of Kalyan Chaubey has been done, I think this question should be asked to him कि Prime Minister's vision is to host more and more global events.
whereas AIFF is looking on the other direction, and they are not currently seeing any to host any such a big event for football, because football is the only game which playing in every country. सो आई थिंक अगर ओलंपिक के बाद कोई मतलब ओलंपिक के लेवल का या फिर उस लेवल का कोई बड़ा इवेंट है तो ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप है. आई थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड टू कल्याण चुबे टू गेट द एग्जैक्ट, हमें भी पता चले कि क्या एक एएफएफ का विजन है, किस तरह से वो सोच रहे कि क्या वो अभी पूरा जो 10-15 साल है वो ग्रासरूट पे फोकस करना चाहते हैं या फिर इस तरह के इवेंट्स को भी वो होस्ट करने के लिए रेडी. आई थिंक ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी जिसका भी इनका साथ इंटरव्यू हो तो पूछा जाना चाहिए. Fair enough. Guys, I wanted your takes as well on this, on the culture aspect of it. Anava Hiren, what sort of impact will it create for Indian footballing culture? Because there isn't too much at the moment. देखिए इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन एकदम से मतलब जो हम जिस तरह से हम दूसरे कंट्रीज में देख रहे हैं उस तरह का आई डोंट थिंक सो कि आएगा. आई थिंक एक शुरुआत हो सकती है अगर कोई ऐसा इवेंट अगर आप होस्ट करते हो तो वहां से फिर आप उसका जो अगर उसी डायरेक्शन में या फिर काम करते रहोगे उसके बाद इवेंट होने के बाद फिर वो एक कल्चर डेवलप होता है. कल्चर ऐसा नहीं कि एक इवेंट आपने कर दिया कल्चर हो गया. दैट्स नॉट हाउ कल्चर बिल्ड. वो एक लंबा प्रोसेस है. उसके लिए आपको लगातार उस स्पोर्ट्स में उस तरह कम्युनिटी के साथ, आई थिंक जो फुटबॉल का मेरे को लगता है कि इंडिया में जो कल्चर बाकी स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी है जैसे वेस्ट बंगाल केरला वहाँ पे तो अलग ही बात है, लेकिन जो बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे वन ऑफ द रीजन है कि वो डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है कम्युनिटी एंड जो आपका लोकल वहाँ का फुटबॉल जिस भी लेवल का हो रहा है क्लब लेवल का आपका स्टेट लेवल का उसका वो उस तरह से एंगेजमेंट नहीं है जो एक चाहिए आपको कि आप लोगों को इन्वॉल्व कर पाओ, उतना एंगेजमेंट नहीं है. सो दैट्स वाई वो एक कल्चर डेवलप करने में वो सारी चीजें हैं. लेकिन डेफिनेटली इस तरह की इवेंट से एक आपको हेड स्टार्ट मिल सकता है कि आप लोगों को मतलब एटलीस्ट आप आई थिंक जो अभी करंटली फुटबॉल देख रहे हैं उससे तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग ही, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है तो कोई भी स्पोर्ट अगर जैसे ओलंपिक होता है तो ज्यादा लोग देखेंगे. उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करते हो उसके ऊपर, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कल्चर डेवलप कर पाते हो कि नहीं कर पाते. Yeah. I know. Is it the push that we need as fans of sport? I think it's the push that you need as a fan. I think it is also a push as a football community, for the stakeholders, because it's something that you need to and want to aspire to, and that is something which I feel is where we get there. And in India, I think we need to work at both ends, which means at the base, at the grassroots, but at the top end as well. Because a FIFA World Cup, and I think you guys would agree, or Olympics per se, a competition like that, whatever how good or how bad we do, will galvanize the country. It would create an interest. And if we're out early in a FIFA World Cup, which would likely happen at the time, whenever it happens, people will start supporting the teams they would have supported anyway, right? The Argentinas, the Brazils, certain people here support England, what we heard the other day, or yesterday, sorry. So therefore, you will support them. But it could give the opportunity. And again, the focus needs to be there, on what is happening, what is not happening. Because at the moment, I feel we're running around like a headless chicken. There needs to be this thing. And in the FIFA World Cup, if I remember, I went in March 2017 to Kolkata. I actually did a tour of the Salt Lake Stadium, and there's still a video of that on my YouTube channel and how the stadium looked. I would have honestly said in 6 months, you will not be able to host a World Cup in that. What happened? Mamata Banerjee herself took it up on her and developed the infrastructure. You had other chief ministers or sports ministers taking up that mantle. You had, let's say, D.Y. Patil, Mr. Patil himself showed that interest to make the necessary changes to D.Y. Patil for it to be a World Cup hosting venue. So this is something which has happened. And yeah, that's the most important thing, that infrastructure development part. And again, people are asking what infrastructure development is left. It's not the stadiums. The biggest development
the biggest development of ISL / under 17 World Cups has been the development on training facilities. People forget that. In 2014, when I was running Mumbai City, we didn't have appropriate training facilities in Mumbai for a team of the level of Mumbai City FC. Now you have a few options for that. नहीं नहीं सर, बताओ। एक चीज मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि आई थिंक ट्रेनिंग फैसिलिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हीरो सुपर कप हुआ उससे पहले भी आप देखें, जो केरला ब्लास्टर के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि वी वुड हैव लाइक टू प्ले हीरो सुपर कप इन गोवा रादर देन इन क्या बोलते कि कोझिकोड और वहां पे, क्योंकि आप जिस तरह की आपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, आई थिंक ओनली गोवा कैन हैंडल द 4-5 मल्टीपल टीम्स, क्योंकि आपके पास उस लेवल का है ही नहीं ट्रेनिंग सेशन की। कलकत्ता भी है। हाँ, कलकत्ता भी है। आई थिंक एक दो जगह के अलावा आप देखिए कि कहीं पे मल्टीपल टीमों को आप अकोमोडेट कर पाओ। I am so my point is for forget multiple, but even for one team. Look at in Kolkata, good example, East Bengal, Mohun Bagan, Mohammedan train either at the Salt Lake Stadium training grounds or they train at the AFF Center of Excellence. The AFF Center of Excellence would have never happened if the FIFA president, in conjunction with the then president of the AFF, had not asked Mamata Banerjee, would you be willing to give us land for an AFF training center of excellence as part of the FIFA Forward program? Right? Goa has their training infrastructure over there, their own. But Goa, of course, has a lot of panchayat grounds, so the opportunity is there. Kerala Blasters have their own infrastructure. Mumbai City have their infrastructure. Look at what has been developed in Bhubaneswar. Of course, the focus originally was on hockey. But the government over there is now focused a lot on football as well. And the point here is, look at what BFC has built in Bellary, one of the best infrastructures, if not the best infrastructure in India. Reliance Foundation, their infrastructure in Mumbai, which was used for the Reliance Foundation Developmental League. Everyone is trying to build something and utilize something, and all of this would have not happened. And that's the point, right? That's why there's a lot of development which has happened, and we need that development to take it to the next level. And it's very, very important like that. Yep. Guys, question again for you guys before we complete the show. Just a correction, Sandeep Kulia, Mohun Bagan doesn't always train on their own grounds. They've trained at the Center of Excellence, and they've trained quite a number of times at the Salt Lake Stadium Training Center. So get your rights fact. I mean, they don't do that. So just Juan Fernando is not happy with the ground there, actually. Exactly. So both all the coaches, even Carlos Cuadrat or Chernisov, don't like to train on the Calcutta Maidans. So this is a develop. If these coaches had come 5 years ago, it would be a daily discussion between club officials and the coaches. Say, listen, I don't want to train on this ground. Right? So therefore, a lot of infrastructure has been built, which was not there 10 years ago. All of this doesn't happen. So therefore, that's the point. So therefore, right? So these infrastructures are needed, and that is something which a lot of, again, a stadium itself, a standalone stadium is not of value. We need training infrastructure. We also need multiple grounds for lower level football to happen. That's another problem we have. Bangalore, good example. The Bangalore Football Stadium hosts most of the divisions, if not, I think, all divisions of the Bangalore District Football Association, right? So that is something which we need. If we can't, we need to expand that infrastructure, because the more infrastructure we have, that will also then trickle down to the grassroots for youth teams to be able to train. And that is, that's the thing. Yeah.
Thanks, Arnav, again for that clarification. My question was, Shan, do you see this becoming reality? Either the Asian Championships being hosted in India, or the FIFA World Cup, or the Olympics. Any of this? Do you see it turning into reality and realistically us hosting these tournaments? So as an Indian football fan, I'll always expect that. मेरे को realistically Asian Cup बहुत ज़्यादा realistic लगता है. सब I think सब लिहाज में I think that will be very good, and I think अगर Asian Cup हम लोग host करते हैं and we can get good results there, it will generate lot of interest among people, जो बहुत important है फुटबॉल को ग्रो करने के लिए. बार बार मैं जो बोलता हूँ, नेशनल टीम का परफॉर्मेंस नहीं होगा, फुटबॉल विल नॉट ग्रो. ये एकदम फैक्ट है. इट हैज टू नेशनल टीम हैज टू डू समथिंग. जो हम लोग फुटबॉल देखते थे, मैं उनाओदा, राहुल, हरी बा अक्षता, हम लोग देखते रहते थे डेली बा. जो हमारी ऑडियंस है, जो एडिशनल क्राउड है, जो नहीं देखते, उनको अट्रैक्ट करेगा कब? जब नेशनल टीम अच्छा करेगा. जो मैं पहले भी देखा हूँ, जब ईस्ट बंगाल एशियन कप जीता था 2003 में, दैट वाज एबल टू जनरेट सम क्राउड. टेम्पो गोइंग टू द सेमीफाइनल्स इन द एफसी कप, बेंगलुरु गोइंग टू द फाइनल ऑफ एफसी कप, तब जनरेट होता है, तब इंटरेस्ट जनरेट होता है. अगर हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे तब होगा. एंड आई थिंक नेशनल टीम अगर एशियन कप, मेरे को लगता है फर्स्ट एशियन कप को देखना चाहिए रियलिस्टिकली. आई थिंक उसका चांसेस भी ज्यादा है हम लोग को मिलने का. वो अगर हम लोग कर लेते हैं, अगर हम लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो आफ्टर दैट वी कैन थिंक ऑफ वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप आई थिंक अभी मेरे को लगता है फास्ट स्ट्रेच एक्चुअली. कतर या साउथ अफ्रीका का बहुत सारे आदमी बोल रहे थे, कतर और सऊदी अरेबिया का जो वो भी पहला बार वर्ल्ड कप खेले एज अ होस्ट नेशन. बट अब ये भी मानना है कतर और सऊदी अरेबिया हम लोग से फुटबॉलिंग नेशन सब बहुत बेटर जगह पे है. ये Yeah. भी है, तो हम लोग को इम्प्रूव करना होगा वो जगह पे जाने के लिए. सो वी हैव टू थिंक स्मॉल स्टेप्स. एशियन कप, देन इफ यू सी 2011 Qatar hosted an Asian Cup. In 2022 they hosted a World Cup. So this is the pathway. So this is the path. We have to think in that way. तब होगा. I think वो पॉसिबल है. आई थिंक एशियन कप होने से अच्छा है. एंड ओलंपिक्स का बात बोलो, आई थिंक ये अच्छा है एक्चुअली. ओलंपिक्स अगर इंडिया करता है, आई थिंक अदर स्पोर्ट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ज्यादातर बात नहीं करते, हम लोग फुटबॉल में ज्यादा बात करते हैं या क्रिकेट में बात करते हैं. पर दूसरे स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए ओलंपिक्स होना इंपॉर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है. और मेरे को लगता है होपफुली वी कैन होस्ट वन डे वर्ल्ड कप एंड ओलंपिक्स. तब मेरे को पता नहीं हम लोग का उम्र कितना रहेगा, बट हम लोग तभी भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया अच्छा करे. Yeah. Hirit, do you think this can turn into reality? Any of these tournaments that we've spoken about? डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि 2050 से पहले आई थिंक एनी सच अ बिग इवेंट आर गोइंग टू हैपन इन इंडिया. एंड डेफिनेटली इस ये देखिए, जो हमारा स्पोर्टिंग नेशन बनने का सपना है, आई थिंक जिस तरह की इवेंट है वो एक अच्छा कदम है कि यहाँ पे तो अवेयरनेस की भी काफ़ी कमी है, क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जो दूसरे स्पोर्ट्स है उसके बारे में उतना आइडिया भी नहीं होता, पेरेंट्स को भी नहीं होता. धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो रही है. तो अगर कोई इस तरह की इवेंट आती है तो वो भी एक क्या बोलते हैं, उनके लिए भी पता होगा कि यहाँ पे बच्चों का करियर इस तरह के स्पोर्ट में भी, इस तरह की चीजें में भी बन सकता है. क्योंकि काफी सारे मेरे को लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट करंटली. सो आई थिंक इस तरह के एक इवेंट आपके लिए मल्टीपल वेज में, सिर्फ आप उसको एक एंगल से या फिर उस तरह से देखेंगे कि फाइनेंशियली, तो आप उसको मतलब कभी भी नहीं ऑर्गेनाइज करवाते. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कोई भी कंट्री रेडी नहीं होता, उनको रेडी बनना पड़ता है. और उसके लिए आपको मेहनत और वो रिसोर्सेज और वो सारी चीजें सही तरीके से करनी पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप उसको क्या बोलते हैं सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं. सो आई डोंट सी कि भाई इंडिया इसमें कैपेबल नहीं है. बिल्कुल इंडिया इज कैपेबल टू डूइंग दैट. एंड आई थिंक नेक्स्ट 22 24 25 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ कि ओलंपिक फीफा, मैं तो चाहूंगा कि दोनों होस्ट करने चाहिए. लेकिन सैन भाई ने जो बोला, आई थिंक कंप्लीटली एग्री कि पहले आप अगर फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो तो उससे पहले रादर देन यू होस्ट एशियन कप एंड देन यू कैन गो फॉर द फीफा वर्ल्ड. Yeah, absolutely, absolutely. Arunava, Hiren has told us before 2050 everything. Agree on that. And again, people are bringing up scams and all that stuff again. You know, to take a myth, I think sports also runs on scams, right? Again, all international events, be it of a certain size, if I like it or not, and I don't like it, but again, are we going to be able to change it? So that's a reality. So if we want to take down that route, then no sporting event of a global scale or even on a continental scale can take part, because money exchange is happening here, there. You know, vendors are paying off, whatever. All these things are sadly happening. But we are looking at purely from a sporting perspective, from a country perspective, and also from a talent development perspective.
And again, sports remains a soft power. You can get a lot of goodwill. The Under 17 World Cup in 2017 has gained a lot of goodwill for India in the football world. I always say I myself in Kolkata attended the quarters, Brazil, Germany, refereeing mistake, yeah, against Germany. But anyway, different discussion. I think we've done enough on that. Brazil, England semi-final, and Spain, England final. An under 17 World Cup with thrice the stadium sold out for 66,000. You have that rarely to never. So if I look at from that perspective, I don't have the infrastructure. But theoretically, tomorrow, if a World Cup, Football World Cup would happen in India, I would have full stadiums. That we could guarantee, right? Yes, correct. But I think we, one of the for us, Chayan, please. no, you can continue. I can. I just after, wanted, please. I just wanted to add one point. For us, I feel we need to focus on both sides of the spectrum, which is youth development and grassroots, and on the other side, big ticket events, and try to merge it down the road. Otherwise, it will not happen. Because if we start developing our grassroots, the point here is it'll take for a country like India, it'll take 20-25 years to evolve and develop. Do we have the patience? No, we don't. As fans of sports, as fans of football, we want results tomorrow. So therefore, these two things have to coexist. But this big ticket events should bring in the budgets to spend on grassroots, youth development, and on good coaches. Our biggest problem are good coaches. Forget the infrastructure part. If we have the good coaches, we will develop and evolve. And that is the key for development. Therefore, youth leagues are being mentioned here very correctly. We've spoken about Indian Arrows as a program. I still feel it's wrong that it was stopped. That has to be what happened to the baby leagues. I'm not hearing anything about baby leagues. All of this needs to evolve. But then the other side is the national team and the big ticket events. And also sometimes reality check. Medeka Cup, if we like it or not, brought us back to reality of where we stand. We all thought in July we are much, much better than we actually are. Or the hope was there. Let's put it this way. There's a lot of work to be done. To just say, hey, listen, I will host a World Cup. India would be great hosts. No doubt about it. Of a World Cup, of Olympics. But you have to see what the Chinese have done. What a Great Britain has done ahead of the London Olympics. What kind of support they have put into their sporting ecosystem. Right? Public funds. And that is something which we need to look at and copy. Look at what the Americans are doing at the moment in funding talent development going into 2028. The French have done it over the last few years with Paris. And look at Paris. Again, people were talking about the Mumbai traffic. Paris will be great as an Olympic city, but Paris will be utter chaos. Most of the venues, even 2-3 kilometers, you're most probably going to walk, right? Because the city will be overwhelmed. And that is something which we need to see is, can we utilize Olympics or a FIFA World Cup to grow either football or Olympic sports in general? And now with cricket involved, it becomes more realistic for India to host an Olympics because the BCCI has the money and the power to host it. Yeah. Sorry, Shine, I stopped you. Yeah. No. I was just wanted to ask. Well, there has been no scarcity of fans. Now the correctly said. I think that's quarterfinal he was mentioning. I think there was a notice that we were supposed to play a semi-final of England and Brazil in Guwahati, and within 48 hours, I think this happened in Kolkata, and I think 66,000 the whole capacity came to watch that game. So fans are there. You will not believe, Rahul, there was so much demand for the tickets for the final and the semi-final in Kolkata, and I think in Kochi also I've heard, and Goa also there has been huge demand for those games, and I think people are interested.
हम लोग को उनको क्वालिटी दिखाना है, क्वालिटी दिखाने से आई थिंक पीपल विल मोर पीपल विल हम लोग के साथ जुड़ेंगे। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट, नेशनल टीम अच्छा करेगी एंड ये होगा, होपफुली हम लोग पुल थ्रू कर लेंगे फ्यूचर में। Yeah, that's the hope, I guess, guys. And thanks, guys, again for joining as always. Thank you everybody in the comments. Please do like, share, and subscribe to the video and all the channels: Arun Foot, Indian Food and Football, Curious Harry, and Sports Khabri. Again, we'll be back for more Indian content like always, guys. Good night. Thanks. Good night, everyone.